Chapter number 3. Noun, number. And what is a noun? Do you know? Yes, noun is the name of a person, place, thing or animal. Clear? Noun क्या होता है? Very good. And today our new topic is noun, numbers. And first of all, I want tell you how many numbers in English grammar. There are two kinds of number. How many kinds of number? Two. One is a singular and another one is a plural. Singular means one, okay, and plural means many. So like one ball, here two, यानी कि balls. So I will tell you briefly here, but now I will teach full chapter line to line. A noun that is a one in number is called singular number. It means underline one in number. With the help of example, I will explain here. Examples. 1. That is my almirah. ओके ये मेरी अलमारी है. तो ये सिंगल, और मैंने आपको बताया अलमीरा होती है अलमारी जिसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाते हैं. कबर्ड होती है जिस हमारे वॉल पे सेटिंग होती है उसमें. ओके. सेकंड इज टैगोर वाज अ ग्रेट पोइट मीन्स कवि. तो यहाँ पे पोइट सिंगुलर, ये टैगोर बहुत महान कवि था. थर्ड, that is my school bus. Here bus is a noun. It is my school bus. Number 4, she is a beautiful girl. Okay, girl is a noun. It means वो बहुत अच्छी लड़की, वो बहुत सुंदर. Beautiful means सुंदर, वो बहुत सुंदर लड़की है. तो बच्चा, above all highlighted word is a number. Okay. As noun that is more than one in number is a plural. More than one यानी कि one से ज़्यादा जो होते हैं वो क्या होते हैं? Plural. Examples. Those are almiras. Those. Okay. That is converted into here those, and almiras. Second one, Tagore and Shakespeare are the poets. Here two persons are there, so poets. Okay. थर्ड वन, दोज आर माई स्कूल बसेस. वो मेरी स्कूल की बसेस हैं. फोर्थ, दे आर ब्यूटिफुल गर्ल्स. ओके. नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स आर मैनी हेयर, सो दिस पोर्शन इज द प्लूरल एंड दीज आर सिंगुलर. हाउ टू फॉर्म सिंगुलर इनटू प्लूरल? सो इट इज़ अ वेरी सिंपल मैथड. ओके. सो बच्चा, आपने रटिफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी, आपने अपनी बुक को ध्यान से रीड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मैनी. यानी पेन पेन्स, बुक बुक्स, फोन फोन्स, आईज, बेड बेड्स, वॉल वॉल्स, टीचर टीचर्स, road roads, house houses. Okay. And ball balls, window windows, students. Underline s here. Underline these s. इससे आपको इजी हो जाएगा. ओके. आपने सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड किया है? s. नाउ सेकेंड वन बी बाय यूजिंग ES, बच्चे जिस वर्ड के लास्ट में SH, CH, X, O एंड S होगा, आपने वहाँ पे ES लगाना. दिस इज़ अ रूल. ओके. दिस इज़ अ रूल ऑफ सिंगुलर. आपने रटिफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी. सर्कल S, SH, CH, X, here also X, then S, CH, O,
O, O, O, O. Here TH also and SH. Add here TH also. Okay, beta. But it is very rare, so no need to write. Okay, learn it. So next one, by adding IES, it is also simple. Y is converted into I and use ES with the I. Okay, like again circle the Y letter. Yes, 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 and it is changed into IES. Okay, in this way it is very simple. So बच्चे आपने रटिफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी. Then again circle Y. Okay, yes, so on. Similarly this portion. D, by using VES. बच्चे जिसके लास्ट में आप FE और F होगा उसके साथ क्या होगा, VES. It is also rule. Okay, like circle again FE, FE, F, 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 FE, F, F. So underline VES, VES, like wife, wives, knife, not knife. Here K is a silent. Okay, knife, leaf, leaves, thief, thieves, so on. And last one is a very simple, by changing internal vowels. Do you know how many vowels? 5. Good. A, E, I, O, U. A, E, I. Here I, O, U. Okay, I will write again, beta. A, E, I, O, U. Okay. So man, A is changed into E. Man, men. Woman, women. Woman, women, women, women. Okay. Ox, oxen. EN. Child, children. Mouse, mice. MIE, MICE. Goose, geese. Tooth, teeth. Foot, feet. Here all are singular and here plural. Okay, like this. And now chapter is finished. I hope you all will understand. But you learn only these things like SH, CH, O, X, O, S, and में इसमें क्या आएगा, add ES. Here Y change into IES. Here FE, F converted into VES. And vowels is changed into vowel. Only A vowel change into E. O vowel change into E. Okay, this is a rule of English grammar. Thank you. Have a nice day.